Hello friends, welcome once again. The registration for the next 2 weeks AFOSOP composite batch at Sahasdi Camp Nagpur is commencing from 18th March to 30th March 2024. The reporting date for this batch will be on 17th March, that is Sunday, and you can leave the Sahasdi camp on 30th/31st March after the termination of the course. Now, there were a couple of candidates who wanted to know if they can join 1 or 2 days late. So let me tell you, it is a fully 2 weeks residential batch where the assessors as well as the candidates will be staying in the campus. So you can come up to 20th March 2024. So though दिन का absence, we will be able to cover it very conveniently because it being a fully residential batch and 24 hours का available है time, except for the sleep time and food का time को minus कर दो. So rest of the time is available for interaction. So you can plan to come up to 20 March तक, 20th March तक. So you can plan to come till 20th March. उससे late होने से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. इसके अलावा there is only 1 week GTO/stage 1 testing का classes available in the offline mode, which you can attend from 25th March to 30th March 2024. The reporting for this will be on 24th March. In this, the entire stage 1 testing and the GTO testing will be covered, which will consist of the 9 tasks of the GTO series. And इसके अंदर the special emphasis will be indoor tasks में group planning exercise and outdoor tasks में the 4 outdoor tasks, which is the PGT, HGT, command task and FGT, which will be conducted based on the concept of structure analysis. And subsequently, since you all have made multiple time requests, it's a ground पे भी होना चाहिए. So I've already communicated in my previous videos that the GTO ground has been created at Sahasda Camp Nagpur, so you'll get the benefit of both. So you can register. To register, you can contact me at 9090099035. Send me a WhatsApp or a call and I'll share you the details. So AFOSOP is available in the offline mode, online mode, and hybrid mode. So make the best use of it and do contact me on the given number. ओके AFOSOP का एक वीडियो है TAT के ऊपर है, वो है, नाम है उसका हीरो सेंट्रिक वर्सेस सिचुएशन सेंट्रिक रेस्पॉन्सेस, है ना. आप लोगों को पता है अनफॉर्चुनेटली SSB के कोचिंग में बहुत सारा ये बताया जाता है कि हीरो बनाना, एक प्रोटैगनिस्ट होगा, वो सब कुछ करेगा, उसके एक्शन बड़े पॉजिटिव होंगे. और मैंने उसी सीरीज में एक वीडियो बनाया था हीरो सेंट्रिक वर्सेस सिचुएशन सेंट्रिक. हीरो सेंट्रिक मतलब यही कोचिंग मॉडल जहां पे आप हीरो बनाते हो, एंड सिचुएशन सेंट्रिक का मतलब पहले परिस्थिति को समझकर परिस्थिति के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया देना, एंड इन द प्रोसेस अ कैरेक्टर विल डेफिनेटली इमर्ज एज द हीरो हु विल बी द मेन प्रोटैगनिस्ट, बट इट विल बी supported with others and it has to be based on the situation presented to you. तो इसी सिलसिले में I conduct these online psychological test assessment where I carry out line by line analysis of stories with the candidates, जहाँ पे one on one होता है और वहाँ पे जिस कैंडिडेट ने स्टोरी लिखा है he only reads the story to me, and wherever I don't understand I question him to explain कि what made him write the way he wrote. After all, this is a situation response model के आधार पर है. So the picture that is presented to you is the situation or the stimulus, and what you write is the response. And between the stimulus and the response, we have the freedom of choice. And this freedom of choice itself is known as the decision-making ability, also the problem-solving ability. Now I'll show you a picture. We'll quickly go through the picture, and thereafter we will go through a response of a candidate who is currently going through the psychological test assessment with me. It is an interactive, 100% interactive session, and the correlation between
your TAT, WT, SRT, and they is established, the concept of congruence. So then once we go through the story, I'll tell you what is the problem in that. And then once you understand that, you will understand what is the importance of the concept of self-management leadership. I keep saying, if you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. So a training or a SSB coaching, which does not touch the development of the self, but only talks about making good stories and making good response and making fattaballi and all those things. You are working on the outside without touching the inside. मैं कहावत कहता हूं, what is the point of polishing the outside when there is no inside? So we need to work on ourselves. So watch this. So this is the picture. You can observe there are two characters, one male and one female, probably in their 27, 28, or maybe around 30. They seem to be in a personal setting, appearing to be sitting in a sofa, which is not visible because of the dark background. But जिस तरह का उनका hand posture है, and the way they are holding their head in opposite direction, clearly it appears there is a conflict between the two of them. And the conflict is in personal setting because of the dress that they're wearing. The man appears to be wearing a round neck t-shirt, and probably the female is wearing again a t-shirt V-necked, sitting next to each other but looking in opposite direction. देखने से ऐसे लग रहा है कि sometime back between them they had an argument. So there is a conflict between them which is yet not resolved. So when the psychologists ask you what led to the situation, is wanting you to identify the conflict and define the cause behind the conflict. And in the second part, what is currently happening, you need to come out with a solution. In the process, you have to resolve this conflict in personal setting. That means the psychologist is interested in your ability to identify the problem or a conflict in personal setting and your ability to resolve or solve the conflict in the personal setting. So that's the solution part. And finally, what is the final outcome is the final outcome of the story, in which case, in this case, the conflict should have been resolved. So this is the expectation from a candidate. Now I'll show you the same picture in color. So this is the picture in color. Now everything is very clear because there is no ambiguity left. So you can see two people sitting on sofa, looking at opposite direction. The facial expression clearly shows that they are upset with each other. So what led to the situation? What is currently happening? And what is the final outcome? Now I'll read out a story which is written by a candidate who has gone for the SSB 5 times, of which 4 times he is conference out and 1 time he is screened out. He has once taken coaching from an institute in Pune, and he has reasonably good command over English language. What he actually lacks is the observation skills, the clarity, the wrong perception, and unable to think within the picture. Now, here comes the importance of the self-management leadership concept, where I keep saying that if you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. So once the picture is taken in through your eyes, something has to happen inside the head. There, because of your YouTube input and coaching input, you're not able to think the way you normally think, and you make heroes out of the blue, which does not conform to the requirements of the stimulus presented. So we will see a similar story, and I'll explain you the issue with that, and then you will understand how it is important to manage the world inside you. Unless you learn to do that, these responses on the outside will always be manipulated and will not conform to the requirements of the stimulus that is presented. I keep saying, between the stimulus and the response, you have the freedom of choice. This freedom of choice is getting corrupted
because of multiple sources that you're referring to, which are non-scientific and does not conform to the psychological principles. आप response को तैयारी करके जाते हो, process पे काम नहीं करते हो. So let's see the story from a candidate. So the story reads, Ajay was the managing director at TCS. He got newly married to Smita. Because of the workload, he did not get too much time to spend with his wife and family members. As Christmas were coming, so there were holidays for 4 days. So he decided to go for a family holidays to Shimla. He arranged everything, booked hotel, airplane tickets, spots to see. After going home, he told this news to his family members. By listening to this, everyone got excited. They started packing their bags as tomorrow they had to leave. They went there, enjoyed a lot. Ajay also felt very good by seeing all of this. So that's a story. Now we will do line by line interpretation of this and we'll try and understand what went wrong in this story. Also, I will request you to post your comments subsequent to watching this video and explain me what did you understand out of it. Okay. So the first line reads, Ajay was the managing director at TCS. So, he's a working professional. Next line says, he got newly married to Smita. So, this couple जो सोफा में बैठे हैं दे आर न्यूली मैरिड कपल. चलो वो भी ठीक है. अभी तक कॉन्फ्लिक्ट या उसका कारण नहीं आया. बिकॉज ऑफ द वर्कलोड he did not get too much time to spend with his wife and family members. Now ये बोल रहा है कि अजय बिकॉज ऑफिस के वर्कलोड के कारण उसको अपनी पत्नी, न्यूली वेड पत्नी एंड फैमिली मेंबर्स के साथ समय व्यतीत करने को नहीं मिल रहा. नाउ वाइफ तो समझ में आता है, यहाँ पे फैमिली मेंबर्स मतलब एटलीस्ट उसके मम्मी पापा तो होंगे ही है, बिकॉज एज्यूमिंग कि ही स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स. सो यहाँ पे दो एक्सटर्नल कैरेक्टर कम से कम लाया, फैमिली मेंबर्स, whereas what we see is a conflict between two people. Let's take Ajay and his newly married wife Smita. लेकिन यहाँ पे and family members किया हुआ है. अच्छा, एक और, because of the workload he did not get too much of a time बोला हुआ है. तो ऐसा लग सकता है आपको कि because टाइम नहीं दे पा रहा इसलिए पत्नी के साथ चिड़चिड़ होना शुरू हो गया. शी इज फाइंडिंग वेरी अनोइंग कि ये टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. देखते आगे. As Christmas were coming, so there were holidays for 4 days. So क्योंकि फ्यूचर में क्रिसमस आने वाला 25 दिसंबर, तो 4 दिन का क्रिसमस का छुट्टी आने वाला है. सो स्टोरी आगे बढ़ गया, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, बस इतना बताया समय नहीं दे पा रहा था. इन दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट, ये झगड़ा नहीं आया, इसको डिस्क्राइब भी नहीं किया, उसका कारण भी नहीं बताया. सो he decided to go for a family holidays to Shimla. तो अजय ने डिसाइड किया कि शिमला फैमिली हॉलीडेज के लिए जाएंगे. लेकिन ये नहीं पता कि ये टीसीएस कहाँ पे काम कर रहा है. टीसीएस पुणे में है, टीसीएस बैंगलोर में है, टीसीएस हैदराबाद में है. सो कहाँ से शिमला जाना है वो क्लियर नहीं किया. अगर वो टीसीएस बैंगलोर लिख देता तो बड़ा क्लियर हो जाता. तो सडनली Ajay ने डिसाइड किया that they will go for a family holidays to Shimla. So he arranged for a family holiday to Shimla. He arranged everything, booked hotels, airplane tickets, spots to see. So Ajay ने अपनी वाइफ और अपने माँ बाप को बताए बिना अचानक से सरप्राइज देने के लिए ये फैमिली ट्रिप प्लान कर लिया. इतना अचानक शिमला जाने के लिए, और उसने प्लेन का टिकट भी कर लिया, होटल बुकिंग भी कर लिया, कहाँ जाना भी डिसाइड कर लिया. खुद ही परिवार वालों को इन्वॉल्व नहीं किया, ना उन्हें सूचित किया कि हमको जाना है. एनीवे, आफ्टर गोइंग होम, सो ये सब टिकट वगैरह करने के बाद जब वो घर गया, आफ्टर गोइंग होम ही टोल्ड दिस न्यूज टू हिज फैमिली मेंबर्स. बाय लिसनिंग टू दिस एवरीवन गॉट एक्साइटेड.
थोड़ा स्ट्रेंज है। इनफैक्ट दे शुड हैव आस्क्ड, यार तुमने हमें बताया नहीं इतने शॉर्ट नोटिस पे। एक्चुअली इतने शॉर्ट नोटिस में क्रिसमस के टाइम पे आपको होटल, टिकट, ये सब मिलना ही मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज लास्ट मिनट रश हो जाता है फेस्टिवल सीजन में। बट एनीवे दैट्स अ मैटर ऑफ इमेजिनेशन, हम उसे स्किप कर सकते हैं। बट द फैमिली मेंबर्स आल्सो आर नॉट क्वेश्चनिंग है तूने ये कैसे कर दिया अचानक, है ना, we could have planned it better. But anyway, so they started packing their bags as tomorrow they had to leave. So planning किस कदर था, आज बुकिंग किया कल जाना था, that's too short a planning, है ना। So आपका प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पे बड़ा सवाल आता है कि आपने ऐसा क्या कर दिया, but that's okay. They went there, देयर का स्पेलिंग THEIR लिखा है, विच इज इनकरेक्ट। दे वेंट देयर, एंजॉयड अ लॉट। तो ये सभी मतलब अजय, उसकी पत्नी स्मिता और उसके फैमिली मेंबर्स, एज्यूमिंग मम्मी पापा, दे वेंट टू शिमला द नेक्स्ट डे एंड दे एंजॉयड। अजय ऑल्सो फेल्ट वेरी गुड बाय सीइंग ऑल दिस। अजय को भी बहुत अच्छा लगा एंड द स्टोरी एंड्स। ना तो सवाल ये है कि अजय ने अपनी पत्नी और अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत बढ़िया शिमला का ट्रिप कराया, लेकिन पिक्चर में तो कुछ और था। पिक्चर में तो अजय और उसकी पत्नी स्मिता के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी उस कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट नहीं किया, ना वो कॉन्फ्लिक्ट का कॉज बताया, ना उसके बारे में कोई रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ी, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ ही नहीं। तो सवाल ये है कैंडिडेट से, मेरे कैंडिडेट से ये सवाल था कि व्हेन दिस पिक्चर वेंट थ्रू हिज आईज इनटू हिज माइंड, तो क्या इसने इस पिक्चर में जो ऑब्जर्व किया और इसने इस पिक्चर में जो परसीव किया, इसमें इतना डिफरेंस क्या? ऑब्जर्वेशन का मतलब है, ऑब्जर्वेशन स्किल का मतलब है आंखों से इस स्टिमुलस को अंदर ले जाके अपने अनुभव के आधार पर, जीवन के अनुभव के आधार पर इस दिए हुए घटना को, पिक्चर में दिए घटनाओं को जीवन के अनुभव के साथ जोड़ के एक व्हाट लेड टू द सिचुएशन बताना था। लेकिन आपने कॉन्फ्लिक्ट ही हटा दिया। पिक्चर को माइंड में ले जाने के बाद अगला स्टेप है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है, परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन दैट इज दिस पिक्चर इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन और एनवायरमेंट। तो आपने इस कॉन्फ्लिक्ट वाले पिक्चर को अंदर ले जाने में, ऑब्जर्वेशन में तो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा लड़के को, लेकिन जब मैंने जब पूछा क्या तुमने देखा पिक्चर में कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसने बोला हाँ देखा, लेकिन जब परसेप्शन की बारी आई तो उसको मिस कर दिया। इसका मतलब है माइंड और इंटेलेक्ट के बीच में जो इंटरनल संवाद हुआ, जिसके बेस पे ये पूरी कहानी की रचना हुई, वहीं पे गड़बड़ हुआ। मैं कहता हूं गंगोत्री में गड़बड़ हो गया और वो रेस्पॉन्स में गंगा बन के बाहर आ गया। तो मैं इस कैंडिडेट से जब पूछा, यार तुमने तो अपने सेल्फ अवेयरनेस में बताया था यूर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू टेक attention, you pay attention to detail, you are a sincere boy, तो जब इतने सिंसियर हो तो ये कॉन्फ्लिक्ट अंदर जाके कॉन्फ्लिक्ट को क्यों नहीं कनेक्ट कर पाया? तो उसने बोला सर मैं शायद पता नहीं हीरो बनाने के चक्कर में मेरे को दिखा तो था, लेकिन मैंने अवॉइड कर दिया। ही गेव सम लॉजिक विच वाज इलॉजिकल, सो उसका रीजनिंग तो नीचे आ गया। नेक्स्ट अगला है पास्ट एक्सपीरियंस। तो मैंने पूछा यार तुमने, तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में भी कभी झगड़े होते होंगे, तो उस झगड़े को देख के तुम पिकनिक जाने की बात करते हो? बोला नहीं सर। तो इसका मतलब है आपने जिस तरीके से इस कहानी को अपने पास्ट अनुभव के साथ जोड़ा, उसमें भी डिस्टॉर्शन आ गया, उसमें भी डिस्टॉर्शन आ गया। तो पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो बोला सर वो वीडियो वगैरह में पॉजिटिव बनाना, हीरो बनाने के चक्कर में वो कॉन्फ्लिक्ट ही मैंने हटा दिया पॉजिटिव होने के लिए। नो, पॉजिटिव को, सॉरी, उस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने में पॉजिटिव नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट को एक्सेप्ट करके उसको सॉल्व करने में पॉजिटिव है। तो आपने उस चांस को गवा दिया और ये एक डिफेंस मैकेनिज्म हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए, कॉन्फ्लिक्ट को ऑब्जर्व करते हुए, परसेप्शन के लेवल में कॉन्फ्लिक्ट को देख रहा है, लेकिन यू डिसाइडेड टू डिस्टॉर्ट इट। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ रॉन्ग कोचिंग। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ यूट्यूब वीडियो जो बोलता है पॉजिटिव बना दो, नेगेटिव इवेंट्स को पॉजिटिव बना दो। कैसे बनाओगे? ए कॉन्फ्लिक्ट इज ए कॉन्फ्लिक्ट, द ओनली थिंग पॉजिटिव अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट इज दैट कैन मेक एन एफर्ट टू सॉल्व इट। आपने वो नहीं किया। इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। नाउ इस पिक्चर में इमेजिनेशन ये करना था इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या होगा, और ये इमेजिन करना था इसको सॉल्व कैसे करूंगा, लेकिन यू डिसाइडेड टू टेक द एंटायर फैमिली, मम्मी पापा जो कि इस पिक्चर में अवेलेबल नहीं है, उनको भी एक्सटर्नल कैरेक्टर बना के शिमला लेके चले गए। सो योर इमेजिनेशन में भी गलती आ गया। कॉन्शियस इज अंदर की चेतना की आवाज ना। आप
हीरो बनाने के चक्कर में अपने कॉन्शियस की आवाज को भी नहीं सुन पाए। जब मैंने उस लड़के से सवाल किया तो बोलता हाँ सर, आप जब पूछ रहे हो तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं जब खुद लिख रहा था ये समझ में नहीं आ रहा। दैट मीन्स आपने अपने चेतना की आवाज, अपने कॉन्शियसनेस की आवाज को हटा के वहां पे कोचिंग का इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब का इन्फॉर्मेशन डाल दिया है। सो उसके कारण आपको ही नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या लिख रहे हो। इंडिपेंडेंट विल मतलब ये डिसीजन, फ्रीडम ऑफ चॉइस आपका है। दिस इज योर चॉइस एंड यू मस्ट टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। एंड यू, इट इज योर जॉब टू ब्रिंग क्लैरिटी इन योर कम्युनिकेशन। एंड आप ऐसी चीजें लिख रहे हो जो मुझे तो बाद में समझ में आएगा, आप रचयिता को ही समझ में नहीं आ रहा। सो वेयर इज द कम्युनिकेशन में क्लैरिटी एंड वेयर इज योर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। सो उसके कारण क्या हो गया, आपका पूरा रिस्पॉन्स जो है डिस्टॉर्ट हो गया। सो बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। एंड आपने इस फ्रीडम ऑफ चॉइस को यूट्यूब वीडियो और कोचिंग के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल ही disorient कर दिया। This needs to be fixed. This is where the entire concept of self-management leadership comes. That if you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. जब गंगोत्री में ही पोल्यूशन हो गया तो उससे बहने वाली गंगा, भले वो कर्मणा हो, वाचा हो या मानसा हो, वो डिस्टॉर्टेड ही आएगा। So the problem is not in the response. Problem is in the creation of response which happened within him. So इसको और अच्छे से जानने के लिए SML के वीडियोस देखो जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप। उसमें एक वीडियो है माइंड मैटर्स। अगर किसी को वीडियो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9090099035 एंड आई विल शेयर यू द डिटेल्स। सो प्लीज वॉच आउट। रिस्पॉन्स को बदलना नहीं है, प्रोसेस को ठीक करना है। प्रोसेस इज व्हाट्स हैपनिंग विद इन यू। क्या समझ में आया जरूर इस वीडियो में लिख के मुझे बताना। एंड जो लोग अगले बैच के लिए रजिस्टर करना चाहते हो 18th से लेके 30th मार्च से के लिए, you can WhatsApp me on this given number and I'll get back to you. Do post your comment and I hope this video is making sense to you. Thank you and may God bless you. Thank you very much.